students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 6 of your class 7 computer, that is graphics in QB64. You know what do in QB64? We draw different pictures, we draw different lines, we draw different diagrams. You know, a computer screen is made up of many small dots, that is known as small graphic that display different graphics is known as pixel. So let's begin with this chapter. In this chapter, we will study about graphics in QB64. Next, we will study about screen and color statement. Third, we will study about unit using draw and preset command. Next, we will study about line, circle and paint statement. And the last one is new image screen statement. So now, QBasic can be used to draw figures and diagrams. So figures or diagrams बनाने के लिए use होता है. You can draw different shapes such as lines, squares and so on. आप बहुत सारी shapes draw कर सकते हो. That can be line, that can be square, that can be rectangle. You can also fill in different colors in these shapes. आप different colors भी fill कर सकते हो इन shapes में. The computer screen is made up of hundreds of picture elements. जो है computer screen of hundred of picture elements से बनी होती है. Very small dots that are known as pixel. You know, the number of pixels horizontally and vertically determine the resolution of the monitor. जो vertical और horizontally क्या vertical और horizontally क्या determine करता है वो हमारे unit of resolution vertical resolution को determine करते हैं monitor की. Higher the resolution, better is the quality of the picture display. जितना high resolution होगा आपको पता है उतनी better quality होती है हमारी picture display की. Now graphics in QB64. हमारे graphics कैसे होते हैं QB64 में? QB64 make it very easy to draw and display different graphics on the screen. हम बहुत easy बना देता है हमारी work को different graphics draw करने के लिए screen पे. Pixels that are picture element can be used to draw lines, patterns, figures of various shapes. So let us understand the different characteristics of a computer. हम अपने computer के different characteristics के बारे में study करेंगे. There are two common modes of display, that is text mode and graphic mode. Two common modes है text mode हो गया और एक graphic mode हो गया. Text mode क्या होता है? It is used to write programs and to get the required output. वो किस में use होता है? Programs लिखने के लिए required element को and get the required output. वो required output के लिए use होता है. Next is graphic mode. It is used for drawing figures. Graphics name से ही पता चल रहा है जो वो figures बनाने में use होता है हमारी screen पे. This can be done by using command like screen 1, screen 2, screen 7, screen 13. The number of written with the screen statement specify the pixel of the screen. वो क्या specify करते हैं हमारे pixels specify करते हैं screen के. The screen of computer usually works on two mode. Two mode पे work करती है हमारी screen computer की. First one is medium resolution. So the computer screen is divided into 320 horizontally divided होते हैं and 200 vertically pixels में divided होती है. Now move to the further page. The second is high resolution. The computer screen इसमें कितने में divided होती है? 640 horizontally and 200 vertically pixels में divided होती है हमारी computer screen. Now screen statement. What do you mean by this? It is used for specifying the screen resolution. My screen resolution को specify करने के लिए use होता है. That is syntax screen mode parameters. Many screen mode can be used in QBasic and QB64. बहुत सारे screen modes use कर सकते हैं QB6 में and QB64 में. Each mode has specific resolution. हर mode का एक specific resolution होता है and support of different number of colors. वो हमारे different numbers of colors को support करता है. The table given below shows the different screen modes along with the resolution and the number of colors that they support. Screen modes are written over here, resolutions are written over there, number of color it supports are written over here. That screen one हमारे इतने resolution को support करती है और कितने color support करती है, it's written over here. You can change screen mode with high resolution in QB64. हम बहुत high resolution पे screen mode change कर सकते हैं अपने QB64 पे. There are two ways of using the screen mode in QB64. Two ways are that. First one is using the same screen mode in QBasic. Same screen mode use कर सकते हैं हम QBasic में. Second one is making use of nude image statement with which enables you to set the width. वो क्या enable करती है आपको एक
width सेट कर सकते हो, हाइट सेट कर सकते हो ऑफ द पिक्सल्स एंड वैल्यू एंड डेप्थ कलर एंड द कलर डेप्थ ऑफ द स्क्रीन के लिए कितनी कलर डेप्थ होनी चाहिए. The screen mode can be defined with the use of predefined screens by screen new image. कैसे डिफाइन होती है? By applying screen new image statement. For example, कैसे अप्लाई करेंगे? Screen new image 640, 480 and 7. Here 640 and 480 means and the screen is 640 is the width of the screen and 6480 is the height respectively and 7 is the screen mode. Now color statement. Color statement क्या होता है? It is not possible to select graphic modes color by their names in QB64. ये बिल्कुल possible नहीं, हम graphic mode colors को set कर सकते हैं by उनके names के साथ QB64 में. The exact color number has to be specified to for selecting a color. एक exact color mode बताना पड़ता है, क्या color number बताना पड़ता है specify करने को, select करने के color को. This statement sets appealing screen colors को क्या set करता है? Appealing screen colors for displaying text and graphics. Now move to the next page. Here is no wait. Except screen O, all screen modes can be used to create graphics. Screen O can be used for text only. Screen O जो होती है आप खाली इसको text O के लिए text के लिए use कर सकते हो. Now syntax, color F, color parameters F, color parameters F and parameter B. So here parameter F refers to foreground. जो parameter F है क्या represent कर रहा है? वो क्या किससे रिफर करता है? फोरग्राउंड से. कलर फोरग्राउंड कलर एंड पैरामीटर refers to the background. जो पैरामीटर बी है वो बैकग्राउंड से रिफर करता है. देयर आर 16 कलर ऑप्शन. कितने कलर ऑप्शंस होते हैं? 16 कलर ऑप्शंस होते हैं बैकग्राउंड के लिए. एंड फोरग्राउंड कलर्स आर विच आर रिफर्ड बाय द वैल्यू ऑफ 0 to 15. 0 से 15 का फोरग्राउंड कलर्स चलते हैं. द बैकग्राउंड कलर चार्ट यू कैन सी ओवर हियर which is 0 to 15. Now example CLS color 9 and 2. आपको color 9 और 2 लिखना है तो print foreground color is white and background color is dark gray. तो 9 पे क्या है हमारा? That is 9 and 2 is dark gray and white. Now using draw command. How to use draw command? The draw command draws a straight line in any direction of the screen on the screen. किसी भी डायरेक्शन पे स्क्रीन पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है ड्रॉ कमांड. यू कैन ड्रॉ अ लाइन बाय यूजिंग द पॉइंटर इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन. आप पॉइंटर यूज कर सकते हो स्क्रीन के मिडल में और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी. दिस लाइन इज ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन विद द यूज ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ हो सकती है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को यूज करके. लेटर डी मीन्स लाइन इज ड्रॉन. लेटर डी का मतलब क्या होता है कि लाइन हमारी ड्रॉ हो गई in downward direction. D means downward direction. U means upwards. U का मतलब होता है upward. R means right and L means left direction. Here syntax draw direction, length of direction. Example is screen 1 CLS color 5 draw U80. U means upward. तो U80 में और फिर end हो जाता है. That is upward direction में line हमारी straight draw हो जाएगी. Now drawing lines diagonally. There are 4 types of diagonal statements. कितने टाइप्स के होता है? 4 टाइप्स के diagonal statement होता है. That can be used for drawing lines in different directions diagonally. हम draw कर सकते हैं lines को अपनी different directions में diagonally. The statements are E allows the pointer to draw a line diagonally. E क्या allow करता है कि आपकी pointer को allow करता है कि diagonally line draw करने के लिए in upward direction towards the right side. F क्या allow करता है line drawing F draws a line diagonally in downward direction. Here G minus draw a line in diagonally downward direction towards the left side. Now H draws a line diagonally upward direction towards the left side. Now here are some examples you can read by your own. Now using pset command. What do you mean by this? क्या है? pset means point set. pset stands for point set. It is used to set the centers of the screen. किसमें यूज होता है? हमारी स्क्रीन के सेंटर्स को सेट करने के लिए. On the other hand, pset commands allows you to set the pixel value. उससे आप पिक्सल वैल्यू सेट कर सकते हो according to your needs. And then draw figures from any point on the screen. आप ड्रॉ कर सकते हो फिगर्स किसी भी एक पॉइंट पे स्क्रीन से. That is syntax pset xy. pset क्या आपकी xy है, x and y, where x refers to the column. x किससे रिफर करता है? आपके कॉलम से रिफर करता है. And y refers to the rows.
Usually, the graphic screen of the computer contains 320 columns. कितने columns contain करती है? 320 columns and 200 rows. Look at the figure to understand the location of columns and rows on the screen graphically. You can look on this picture and you can understand the picture graphically, screen graphically. Here are some examples also, that CLS screen 7 colors, 3 and 15 piece set, 150 60, and that is 4 screen. Draw F50, L100 and E50, that is P set 150 120, that is screen 2. Draw H50, R100, G50 and N. यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पे G50 एग्जाम्पल 2 में ये डायग्राम ड्रॉ होगा. Now let's talk about line statement. It helps to draw a straight line between 2 points on the screen. आपकी straight line draw करने में help करता है. 2 points के बीच में एक screen पे. We should select the screen mode which supports all the 16 colors of better output. Now syntax line x1, y1, x2, y2 and color. Here x1, y1, x2, y2 refers to starting and ending coordinates of the line, which is drawn in color that is specified. Example, program to create an isosceles triangle which has a horizontal base. आपको एक isosceles triangle draw करना है, उसका horizontal base होता है. You can draw by this command. Screen 7, color 10 and color 10 5 CLS print. It is an isosceles triangle. Line once, या print किस में text पे type करोगे. 160 30 250 180 and 4. Line 250 180 70 180 and 2. Bracket open 70 180 bracket close minus 160 30 and bracket close, that is 1. This is the end. Either by this command you can draw the isosceles triangle. Circle statement. Circle की क्या statement आती है? It can be used for drawing a circle. वो किस पे use होती है? एक circle को draw करने के लिए use होती है. Ellipse or an arc of the circle. एक ellipse draw करने के लिए या arc draw करने के लिए circle की syntax क्या आएगा? Circle x, y, r, p. The coordinates x and y refers to the center of the circle. किससे refer करते हैं हमारे center से circle के on the screen. R refers to the radius. R क्या है हमारा? Radius है of the circle. P refers to the color code. P किससे refer करता है? Color code से refer करता है. Example, screen 7, color 14 15, CLS print a circle. CLS क्या है हमारा? Print a circle. Print a circle, that's circle 160 and 100, 50 15 and. This is the statement, color statement. Now paint statement. It is used for filling an object with a color of your choice. आप अपनी color की choice के according आप statement को किसी भी graphic को fill कर सकते हो. It determines the coordinates from where the figure will start and also fills the color within the area of the figure. आपकी पिक्चर के फिगर के अंदर भी ड्रॉ कलर फिल करता है और जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहां से भी. नाउ सिंटेक्स क्या रहेगा इसका? पेंट एक्स वाई कलर बॉर्डर कलर. नाउ एग्जांपल इज CLS screen 7 color 3 circle 100 100 and 40 paint 100 100 color 5 में 200 and 150 paint 200 and 100 like at end. Now new image screen. What do you mean by this? It is used for creating a new screen size with higher resolution with the help of predefined screen option. एक न्यू स्क्रीन साइज सेट कर सकते हैं एक हायर रेजोल्यूशन के साथ. किसकी हेल्प से? प्री डिफाइंड स्क्रीन ऑप्शंस की हेल्प से. The following two examples shows the difference in the use of view image screen statement and QB64 and screen statement in QBasic. जो examples अब हमारे क्या शो करेंगे? डिफरेंस बताइए. न्यू इमेज जो हमारी QB64 पे है तो स्क्रीन स्टेटमेंट पे and screen statement in QBasics. Here are the examples. You can see screen statement in QBasic is like this and screen statement QB64 is like this. In both the cases, the output of the program is same. जो हमारी screen का output है दोनों में same आया दोनों cases में, but इनका क्या है? Size तो different है ना, because QB64 में small size आ गया and QB6 में थोड़ा bigger size आया है. Now know it, QB64 is available on multiple platforms. QB64 आके multiple platforms पे available including Windows, macOS and Macs and Linux, allowing developers to write and run programs across different operating systems. So
That's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.